Good evening, everyone. I hope you all are doing good. Usually, we start our session around 8 p.m., but today we have started it a bit early. Uh, so, uh, the ideal time for this session is 8 p.m. If anyone has any specific questions, feel free to shoot. I would be happy to answer your questions. Please share your token. So on this channel we do have a very strict policies. You can read the message here right on my head. So anyone who is interested, anyone who is interested getting a reading right, they must have the application and they should share the token. So please do share the token, Lacuna token, and we can take up your question. Sure, let me open the chart. Just hold on. Yeah, so we do have your chart open. It is kind of, I mean, it's quite a stable chart.
So two major concerns we can see in your LoshuGrid, which is predominantly the numerological representation of your birth chart, birth details. So based on that, there are two things which seems to be pretty evident. That is, one is your marriage life, your relationships. That is one thing. दूसरी चीज़ जो इसमें देखने में आ रही है, your career. So these two things must be unstable. Now, if we look at the possibility of you changing your job or better career possibilities, for that, just give me a minute. Your 10th house lord is Sun. And your Sun is sitting in your 9th house. That is a good thing. And Sun is in a very strong position. So your astrological chart is not deviating from, it's deviating from what we see in your numerological chart. But we also need to see that what is the positioning of the 10th house, right? So within the 10th house, if we see the planets which are sitting there are not very favorable. So even though your lord is very strong, the planets sitting there are not very well positioned, and because of that you may be experiencing some issues with your career. So that is a default we can go ahead with. Hey, hi Fatima, how are you doing? I'm good, Fatima. How are you doing? And how is everything at your side? Everyone in Pakistan? So you moved out of Surya Mahadasha and now you are in Chandrama Mahadasha at the moment. And within the Chandrama, if we just see that the time which you are currently going on is within Chandrama, you do have the Rahu Antardasha and then the Guru. So during this time, you would be having a lot of mental clutter also. So thank you, Fatima. Thank you so much. Same wishes from my side. So you will be having a lot of mental clutter at the moment, Mr. Gopal. And ये mental clutter जो है would continue till next year, ठीक है? तो ये थोड़ा सा mental stress रहेगा. The areas it can impact is predominantly the areas where Rahu is shadowing, right? तो वो areas में आपको problem हो सकता है. As far as changing the job is concerned, starting from October, you may experience some opportunities which are there, which you can see and try to materialize. But there is an issue. But the yukti of Chandrama and Rahu, right, would keep you confused in the sense whether you should really go for that or you shouldn't go for that. So these kind of dilemma would be there. So even though there is a possibility of you getting some opportunities, and that's not very strong possibility, I would say, because Saturn is at the Pratyantra Dasha level. So in a way, there is a very thin possibility, but yes, you may be experiencing some options in the month of October starting from 12th. So right now I would say that there is no strong possibility of having a job switch.
Fatima, in case if you have any questions, feel free to ask. Yeah. Yeah, so you would be in the state of confusion, although there would be a few options available here and there, but not necessarily that it will get materialized in some sort of concrete opportunity. So I would say whatever and wherever you are, you must continue that. You should not deviate too much. Even though there are practices which you can try, but rest assured, starting from uh, November of next month, right? You are going to get a beautiful growth and a lot of opportunities which would be quite favorable for you, considering your Jupiter is pretty strong. So wait for some time and don't do a lot of changes. And as far as mental clutterness is concerned, it would be predominantly worrying you on the lines of your relationships also. So just be very careful, navigate it carefully. फातिमा, इफ़ यू कैन शेयर योर टोकन तो मैं देख सकता हूँ व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, लेकिन बिना टोकन के आई वुड नॉट बी एबल टू हेल्प. तो आप लकुना एस्ट्रो ऐप को डाउनलोड कर लो. इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल. आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. हे हाय आयुष, हाउ आर यू डूइंग? आयुष, आप ये मल्टीपल मैसेजेस मत भेजिए. आप लकुना एस्ट्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ ऊपर दिख जाएगा. राइट, यू कैन रीड दिस, राइट? आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. उसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करिए एंड देन आस्क योर क्वेश्चन. डायरेक्टली आस्किंग योर क्वेश्चन आई वुड नॉट बी एबल टू एंटरटेन, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा. एंड व्हेन आई क्रिएट प्रोफाइल तो वो मेरे अकाउंट में क्रिएट होती है. एंड दिस इज़ माई एप्लीकेशन, माई प्रोडक्ट. तो आप जब इस एप्लीकेशन के अंदर जा कर के अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपको अपनी भी एक तो प्रोफाइल का फुल कंट्रोल मिलता है. कल अगर आप प्रोफाइल डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल डिलीट कर सकते हैं. साथ ही साथ जो भी रेमेडीज़ आपको दी जाती हैं आयुष, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं. ऐप के अंदर आप उसको देख सकते हैं रेमेडीज़ को. और साथ ही आपको बहुत सारे और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड क्रिएट योर प्रोफाइल. यहाँ जितने लोग भी आते हैं सब टोकन के बेसिस पे ही आते हैं आयुष. सो डोंट फील कि आई एम जस्ट सुपर इम्पोजिंग एनीथिंग स्पेशली ऑन यू. तो ऐसा नहीं है. आयुष, आप ये कर सकते हैं प्लीज़.
मीनवाइल मैं फातिमा का चार्ट देख रहा हूँ. या फातिमा होल्ड ऑन. Seventh house lord is Saturn. Just hold on. Saturn sitting in the 12th house. But okay, that is fine positioning. I mean, see, Fatima, from your side, right? Your efforts are genuine. मुझे तुम्हारे एफर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इन दिस रिलेशनशिप. मोस्ट लाइकली योर पार्टनर, राइट? अगर आपके पास पार्टनर का भी टोकन है तो आप वो शेयर करिए. आई कैन लुक इन टू हिज चार्ट ऑल्सो, बट योर चार्ट इज़ क्वाइट फेवरेबल फॉर फॉलिंग इन लव एंड देन रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर. वो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी क्लियरली विजिबल हैं. So it is most likely to be a love, right, Fatima? The possibility of you falling in love is more. ठीक है? And I can also see that there is a bit of misalignment with your family. तो आपकी फैमिली हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्टिव नहीं हो फॉर दिस रिलेशनशिप, बट कांट डू मच, राइट? you want to be in love, you want to be with that guy, so क्या करें? चांसेस लव के ज़्यादा हैं. अब वो फैमिली में है, फैमिली के बाहर है, वो चीज़ें नहीं प्रिडिक्ट की जा सकती हैं. आई नो दैट इन योर रिलीजन क्लोज रिलेटिव मैरिजेस आर ऑल्सो पॉसिबल. तो लेकिन हम उसको एस्ट्रोलॉजी से वो नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. थैंक यू आयुष. सो फातिमा, योर चार्ट इज़ प्रिटी फेवरेबल, तो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं सजेस्ट करूँगा मैं आपको. अगर आप चाहें तो आई कैन सजेस्ट यू समथिंग रिलेटेड टू हकीक और समथिंग जो आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाए. अगर आप चाहें तो दैट आई कैन सजेस्ट यू. ठीक है? just confirm if you want. I can suggest you. Just hold on. I'll do that. Or I'll suggest you something which is in form of a stone, क्योंकि आपके रिलीजन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप नहीं कर सकती हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू बी केयरफुल, है ना? This is your last question, huh, Fatima? Then I have to move to Ayush. Just hold on. हाँ आयुष, वी आर कमिंग टू यू. फातिमा, जॉब मिल जानी चाहिए, but you need to do a remedy. I'm just updating, and in Pakistan, if there is any nearby store or something, right, where you can get the semi precious stones, तो आप उसको buy कर लेना. I'm just suggesting you for both the things, right, for relation and job, both. Just hold on. जॉब मिल जाएगा आपको, लेकिन टाइम है थोड़ा अभी उसमें.
अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हो, ये चीज़ें अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं. इफ़ यू वर इन इंडिया आई कुड सेंड यू. वी डू हैव इंटरनेशनल डिलीवरी ऑल्सो, बट there would be a lot of issues in terms of payments and other things, right? So you try to find it there itself. ठीक है. Fatima, hey, hi Sakshi, how are you doing? Fatima, your रेमेडीज़ आर अपडेटेड. आप जाकर के ऐप में एक बार चेक कर लीजिएगा. आई एम मूविंग ऑन टू आयुष नाउ. हे हाय आयुष, आर यू स्टिल विद अस? फातिमा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा. योर रेमेडीज़ आर अपडेटेड. Yeah, Sakshi, so your friends came yesterday. May I request you to share your token, please? Thank you, Sakshi. Just be with me for some time. मैं आयुष का पहले कर लेता हूँ, उसके बाद I'll come to you. आई हैव ऑल्सो सीन ऑन दिस चैनल कि कपल्स आते हैं और वो कपल्स अलग अलग पूछते हैं. बॉय वुड बी आस्किंग अबाउट गर्ल एंड गर्ल वुड बी आस्किंग अबाउट बॉय. एंड आई हैव ऑल्सो सीन दैट कि इट लीड्स टू अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन, राइट? तो आप लोग थोड़ा सा आपस में डिफरेंसेस ना पैदा करें इस तरीके से. जेन्युइनली एक दूसरे को ट्रस्ट करके यहाँ पर आएँ, एक साथ आएँ. डोंट ट्राई टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन यू, बिकॉज व्हाट आई सी इज़ व्हाट आई वुड से. तो वहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है. बट इफ दैट इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन यू टू, आई एम नॉट अ काउंसलर टू रिजॉल्व दैट, राइट? फिर बाद में आप लोग आते हो ऑफलाइन और पूछते हो कि सर ये हो गया वो हो गया. तो डोंट डू दैट. माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़, if anyone out here is a couple, right, and asking it separately, तो थोड़ा सा केयरफुली करिए, क्योंकि ये आपके बीच में डिफरेंसेस पैदा कर सकता है. ठीक है आयुष, योर चार्ट इज ओपन. योर नेम इज आयुष यादव. You are born in Mumbai and you are 2008 born. ठीक है? You are pretty young and I loved your question. ठीक है? क्या और मैं एजुकेशन बिजनेस में कैसा करूँगा? कॉलेज में होगा क्या और मैं एजुकेशन बिजनेस में कैसे करूँगा? Just hold on. सी योर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट इंडिकेट्स दैट कि एजुकेशन बिजनेस में तो चांसेस कम ही हैं कि आप बहुत अच्छा कर जाएं. बट इट इज़ मोर अबाउट बिजनेस, लेस अबाउट हाउ इंटेलिजेंट यू आर. ओके, सो दैट इंडिकेट्स कि बिजनेस वाइज यू कैन डेफिनेटली डू योर बिजनेस. बट योर चार्ट इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट a guy who is top notch in the class, right? तो आप स्टडी में बहुत अच्छे नहीं होने चाहिए, is what your numerological chart is indicating. I'll just simply see that कि आपका एजुकेशन की क्या possibilities हैं. Just hold on. Chances of you getting the nearby college for education, वो थोड़ा सा हाँ ठीक. या आयुष, इसको दिल पे मत ले. आई मीन्स हर्ट मत हो. टीचर हायर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. बट यू कैन बट येस, यू कैन डू दैट बिजनेस.
अगर आप कॉलेज का अपना देख रहे हो, नियर बाई कॉलेज का देख रहे हो कि पड़ोस का कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो जस्ट होल्ड ऑन, चांसेस थोड़े कम हैं आयुष. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर, राइट? जस्ट होल्ड ऑन. नो, नो आयुष, नियर बाई कॉलेज का तो चांस नहीं है, बट येस, दिस एजुकेशन वाला बिजनेस इज़ व्हाट यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई. उसके लिए आई वुड से दैट येस, यू शुड गो अहेड एंड गिव अ ट्राई, because your 10th house lord is Mercury, so most likely you would be pretty much involved in that business. Obviously I would request you not to teach. Yeah, yeah, you can go for it. Only recommendation is just have separate batches, so don't have common batches, otherwise there is a possibility of trouble, right? So if you can create separate batches for boys and girls, that would be pretty good for you. More business you are going to get from girls, so the batches, girls batches would help you make more money. बट पास का स्कूल तो नहीं मिलने वाला, और मुझे लगता है कि पूरा कॉलेज तुम करोगे भी नहीं. इवन इफ़ यू गो फॉर द ग्रेजुएशन, मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उसको बीच में ही छोड़ दो, उसको पूरा नहीं करो, बिकॉज यू वुड बी थ्राइविंग इन योर बिजनेस. सो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, बट आई डोंट सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ नियर बाई कॉलेज. Okay, if you want I can suggest you something, but उसका कोई फ़ायदा है नहीं, but if you want I can suggest. Okay, hold on. You are in Mumbai. You want a college in Hyderabad. Hold on. Yeah, it is possible then. If you were looking a college in Mumbai, then that was hard. But Hyderabad, the college is possible. It is favorable. You can get that. मिल जाना चाहिए आयुष. If you are going far from home, then yes, it is possible. Far from home के लिए yes, I would say that yes, it is possible. आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग, आप वो ले लीजिए. वेर एवर यू गेट, यू कैन गेट दैट. यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अस ऑल्सो. आई एम अपडेटिंग योर रेमेडीज, जस्ट होल्ड ऑन.
Ayush, your remedies are updated. You can check in the app. Hey, hi Aishwarya. How are you doing? No need to share Aishwarya. You can just share your token. The channel is pretty decent. The people who come here are also very decent. So they make sure that they are not spamming. So the influx of messages are very low on this channel. So what you can do, you can just share your token and ask your question. That is it. Nothing else needs to be done. Ayush, your remedies are suggested there that you can do. I'm good, Aishwarya. I'm good. Hold on, Ayush. I'll help you. I'll help you reach there. Just hold on. नहीं नहीं ऐप में मिलेगा रुको रुको in the application if you see your kundli here right नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा you have to go to your kundli when you click on your kundli there you will get to see a cross button when you click on that you will get to see your remedies here all your remedies would be listed there very good nice these things are available on Amazon a lot of vendors are selling there if you want you can buy from us also both of them are required for you considering your age so you must consider that बाकी तुम्हारी मर्जी whatever you want to do you can do you are a grown up man now and guys just wanted to let you know that this session is for just 1 hour in 1 hour we cover 5 to 6 readings so at max means we try to give 5 to 10 minutes time to an individual तो आप अपना उसी हिसाब से प्लान करके आया करिए इस सेशन में एंड दिस सेशन इज़ ऑलवेज yes please do consider and these are custom configuration so you can read there right the configuration which is mentioned there ऐसा मत करना कि अलग अलग ब्रेसलेट खरीद के 4 ब्रेसलेट पहन के घूम रहे हो डोंट डू दैट यू कैन गो फॉर अ कस्टम कॉन्फ़िगरेशन just wear that custom configuration and there is a very specific process to energize these stones and everything so for that you can anyhow ask my team and they will send you the instructions you can follow that when you have the item so choice is yours but please do that the thing which I love on this channel is that hey hi Sakshi I'm so sorry I'm so sorry just hold on Sakshi I'm so sorry I literally forgot about you just hold on if anyone who is new to the channel and taking my consultation I would request you to subscribe to the channel also because sometimes what happens in most of the cases people
take the remedies, they buy the remedies, definitely from different places. लेकिन वो करने के बाद they come back and they share their feedback and all that, right? So it would be hard for you to find me if you are not subscribing. So please do subscribe so that whenever I come live, you get a notification. Whenever you want to share your opinion, you know that yeah, this is the time I'm coming live. And we regularly keep posting also, where you are informed at what time we are coming live. If there is a change in the schedule, we also post that. So my highly recommendation would be that please be a subscribed member. Going to Sakshi. And Sakshi, I had a look of your chart yesterday also, but I deliberately didn't say anything because I was not very sure, right? The intent. Means even though it was asked by a person whom I know, but whether you are comfortable someone else talking about you behind your back was a concern I had. And that was the reasoning I didn't discuss anything yesterday about you. Now, if I look at your chart, then it clearly indicates that there is an instability in your relationship. It clearly indicates that. And it also indicates that you were quite emotionally involved in whatever relationship you had. But it didn't work out. I haven't seen your partner's chart, so I don't know what was his mentality or how he handled this situation. But in your case, you were pretty much okay. I don't know what Priya told you because we haven't spoken about you to anybody else. I wanted to make sure that you are the person who is available and who is informed about what is happening in your life, rather than your friends hearing from me and then going back and telling you. So there is a fair bit of chance of getting the message altered, right? So that was the reasoning I wanted you to be here. Now going back to your chart, I can say that the relationship instability is clearly being seen in your chart, and you were pretty much involved emotionally in whatever relationship you had. Education wise, you are a brilliant lady. You are a brilliant lady. You have brain, you have wisdom, so समझदार हो. Now you must be aware of one thing. No matter how many times you fall in love, no matter whom you marry, but there is a considerable chance that you may have an unstable relationship. So when I say unstable relationship, you must take care of that, yeah, for long-term sustainability point of view. Otherwise, this would be a considerable area of concern for you in future as well. There is also possibility of you struggling in getting a job initially. Okay, so there is not something which is just sitting there as a piece of cake and you go and enjoy. Nah, efforts would be required, and those efforts are expected to be considerably big. So this is what your chart indicates. Yesterday the question was more around your relationship and your mental state, so that is visible, that I can see there. If you have anything else which you want to ask, please do let me know. Right now you are under Surya Ketu. You are currently in Surya Buddha Shani. Next one is Surya Ketu. Okay, so be careful a bit. You would start facing a lot of detachment with everything, whatever you see around, right? So life is not about just living in isolation, right? You must be quite careful, otherwise you may feel lost
you may feel that nobody is there for me. So वो सबका कोई purpose है नहीं. It's a illusion which you would be surrounded with, and that is going to be there till February 2026. So इस समय में थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को थोड़ा सा engaged रखना, अच्छे सर्कल में रहना where you feel that you have good friends around. Married life would be a bit of full of struggles. So there are struggles in your marriage life, Sakshi. But I'll confirm it with your astrological chart also. Just hold on. Numerological chart clearly shows that there is a bit of struggle there. And you are Mangalik also, Sakshi. So I think you know that, right? Your astrological chart also confirms to the same, Sakshi. So marriage seems to be pretty unstable. Just hold on. And Sakshi, I would say that in terms of marriage, right, you have to be careful also. Career, I'm just checking, just hold on. Marriage is a big concern. You just be very careful with that. Hey, hi Jyoti, how are you doing? Yes, Sakshi, hold on. So your life path number is 9 and your birth number is 3. So 9 and 3 are considered to be a good positioning, right? So you are positioned pretty strong. So I can say that there are 3 possible career options you have. One is your creative arts, or you can pick a career of teaching or writing. So writing is an area I think that is no longer holds too much credibility because of the artificial intelligence and large language models. So the 2 areas which are very favorable for you are creative arts and teaching. So anything out of these 2 you can choose. But more than this, right, I would suggest you to be very careful with your relationships. I would suggest you something which you can consider using. Marji tumhari hai. I would just tell you. I don't know why do I feel that this chart is resembling somebody else, because there are a lot of similarities. And there are a lot of similarities. Yeah, I'm updating Sakshi, just hold on. I need to just see your chart and the positioning of the planets, and based on that I'll update the remedies. Just hold on.
Your friend Priya is also of same Lagna. She is also from the Vrishava Lagna. Jyoti, please don't ask questions directly. You have to follow this instruction, right? You can see here the instructions are written here on my head, right? Just above my head you can see this. So you must download the application, create your profile and share your token. आप पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए यहाँ पे चैनल में जो भी डिस्कशन चल रहा है. एवरीवन इज शेयरिंग देयर टोकन टू गेट द रीडिंग. इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. सो आई वुड इंसिस्ट यू टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस and subscribe to the channel also. Just hold on, I'm updating your remedies, Sakshi. Just hold on. Sakshi, I just hold on. I'm not feeling comfortable. Why do I see that there are a lot of similarities between your chart and Priya's chart? I need to check. Just hold on. There are considerable similarities between your chart and her chart. Why is that happening? Oh, okay. You both were born. I mean, the time difference between you two are not very considerable. There is just 2-3 months time frame difference. That's why there are a lot of similarities in terms of the planet positioning. Okay. No problem. I'm updating your remedies. Just hold on. So I'm just suggesting you something for job and marriage both. Major area of concern is marriage. Sometimes I see that people take things personally, right? Anyways, it's their problem. Okay.
Yep, Sakshi, your remedies are updated. You can go and check that now. And Sakshi, these means you need not to take three different bracelets. If you go for three different, then it would be pretty costly for you, and you don't need three as well. So, what I have suggested is a custom configuration. Consider having those combinations coming together in a specific count. So there are multiple things, right? I have just suggested you, but when you go for that, you need to check multiple things in terms of what's your wrist size, how many beads would be required, and all that. If you are interested, you can ask my team and they will help you with that. So the remedies you must try, and these are long-term remedies. You can't just do it and move on. So these are aligned to your current lagna. So based on that, these are suggested. I would request you to please follow them. Thank you so much, Jyoti. I am opening your chart now. Jyoti, it's pretty good chart. What's your question? Yeah, you can, but you are already 40, right, Jyoti? Uh, just hold on. There is a possibility of you cracking a government exam. But let me see if there is Dasha supporting this. Just hold on. When is your exam, Jyoti? Ah, okay. Fine. When is your exam, Jyoti? No problem, Jyoti. When is your exam? If you can tell me, that would really help. When is your exam scheduled? If you don't mind, can you please tell me? Okay, on 6th of September. And when is the result due? When are you expecting the result? No problem, Sakshi. You take care. And Sakshi, just want to let you know that please. Okay. Sakshi, just wanted to let you know that start your remedies sooner than later, right? Otherwise, it becomes a considerable problem, right? When you can solve it, you should do that. Yeah, fine, Jyoti, fine.
Jyoti, is this the last attempt you had, or there are other attempts also available? Is this the last attempt? Jyoti, the dasha is not very supportive. Jyoti, the dasha is not very supportive. Okay. आपकी जो अभी की करंट दशा है इन विच यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट्स राइट is not very supportive, and you must be going through a lot of mental stress at the moment. तो मेंटली आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, दैट इज़ देयर. बट जो टाइम है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुवरी is not demonstrating any favorable time. ठीक है ज्योति. So I'll not means अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो. You can't do much remedies for this, right? क्योंकि there are multiple variables involved. तो सबको मैं बताना चाहूँगा कि remedies आप तभी तक कर सकते हो when number of variables are less means zero. तो यहाँ जब आप अपने आप को एक कांस्टेंट की तरह यूज़ करना शुरू करते हो तब रेमेडीज़ काम करती हैं. इफ़ देर आर थ्री फोर पीपल इन्वॉल्व तो वहाँ रेमेडीज़ का इतना बड़ा कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि थिंग्स आर ऑलरेडी आउट ऑफ योर हैंड. सो एग्ज़ाम के केस में एग्ज़ाम से पहले जो करना है कर सकते हो, एग्ज़ाम के बाद नहीं कर सकते हो व्हेन यू आर डन विद द पेपर. ज्योति, नेक्स्ट ईयर अगर आप बताएं तो मैं गोचर को शिफ्ट करके एक बार देख सकता हूँ. बट यू नीड टू टेल मी कि नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट कब मिलेगा. अगर ये सितंबर के टाइम में मिलेगा तो आई कैन सी दैट, बट प्लीज़ कंफर्म. Okay, Jyoti, hold on. Next year chance is pretty good, but you must start doing remedy. वो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ द वे यू आर गोइंग टू क्रैक दैट. क्योंकि जो अभी आपका टाइम चल रहा है ये आपको मेंटली स्टेबल होने नहीं देगा. सो हेयर यू मस्ट नीड स्टेबिलिटी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. ऐसा तो है नहीं कि आप बस समय का वेट करो, पढ़ो लिखो, कुछ नहीं अपने आप हो जाएगा. तो तुक्के से नहीं होगा, प्रिपरेशन से होगा. सो फॉर दिस यू मस्ट टू थिंग्स, राइट. वो मैं अपडेट कर दे रहा हूँ. या ज्योति, ये जो टाइम है ना, आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग हेयर, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है नहीं. आई डिडंट नो दैट लास्ट टाइम नहीं हुआ था आपका, बट टाइम से तो यही पता चल रहा है कि नहीं होना चाहिए. आपका जो नेक्स्ट ईयर का विंडो है काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि योर लाभेश इज़ इन्वॉल्व देयर. सो आपको वहाँ से फ़ायदा मिलना चाहिए. सो हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं, और वो उसी विंडो में पड़ रहा है जिस विंडो में आपका एग्ज़ाम होगा. तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप मेंटल स्ट्रेस लेना बंद करें, तैयारी पे ध्यान करें, और चुपचाप सिंपल सी रेमेडीज़ को ट्राई करें.
रेमेडी का पर्पस क्या है वो मैं आपको पहले क्लियरली बता दे रहा हूँ. कुछ लोग रेमेडी लेते हैं इसलिए कि बस अब रेमेडी ले ली, हो गया मेरा काम ना. रेमेडी का पर्पस है, इट्स अ काइंड ऑफ अलार्म विच इज़ ऑलवेज विद यू एंड बजिंग. आपको समय समय पे याद दिलाती रहती है कि दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर डूइंग दिस. सो वो जो अफर्मेशन होता है ना कि दिस इज़ द रीजनिंग वाई आई एम डूइंग दिस इज़ व्हाट मेक्स यू सक्सेस. वो गले में रुद्राक्ष डालना या हाथ में वो ब्रेसलेट पहनना ही सक्सेस का डेफिनेशन नहीं है. तो द मेन और दूसरी चीज़ ये भी है कि द रेमेडीज़ विच यू आर डूइंग आर वेरी पर्टिकुलर, राइट. सो किसी को मंत्र बताओगे, किसी को यंत्र बताओगे, तो किसको मंत्र बताना है, किसको यंत्र बताना है, इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग. सो इन योर केस वी कांट सजेस्ट यू एनी मंत्र बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू डू दैट. क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यू वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन योर करंट दशा. सो जब आप कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे तो मंत्र दे के टाइम क्यों ख़राब करना. सो यू कांट डू दैट. So accordingly, I'm going to update your remedies. I would humbly request you to please go ahead and practice that. वो practice इसलिए करना ज़रूरी है कि you can take the maximum benefit of the time which is coming for you. ठीक है? So I'm now going to update that. Where is my iPad? आप वैसे भी द्वि सभा राशि आपकी उसमें बैठी हुई है, मीन लग्न की आपकी कुंडली है. Anyone else, if somebody is interested, please do share the token, otherwise the session would be closing in next 10 minutes and Jyoti would be the last one for today. So as I said in the beginning कि ये सेशन का जो टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा है. उस 1 घंटे में अगर आप आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, otherwise I would not be extending it beyond 1 hour. And I understand कि हम 8 बजे स्टार्ट करना चाहते हैं, but if I get time 15-20 minutes before, then I start that. So we have already completed 1 hour. So 10 मिनट में और रहूँगा यहाँ पे. If anyone is interested, तो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए, टोकन को शेयर करिए, एंड आई वुड डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपको अपना समय दूं और उसके बाद ही सेशन को बंद करूं. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये फॉलो करें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अपना समय दूं. और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको पता रहे व्हेन आई एम कमिंग लाइव. ओके ज्योति, आई एम अपडेटिंग योर रेमेडीज, जस्ट होल्ड ऑन. और एक चीज़ और सबको बताना चाहूँगा कि द रेमेडीज़ वी आर सजेस्टिंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन कि पानी ज़्यादा हो गया शरीर में या आग ज़्यादा हो गई आपके शरीर में. तो दोज आर वैलिड थिंग्स बट not very practical in nature, right? So any remedies which are suggested to you here on this channel are totally based on the astrological aspects. तो आपको जो भी बताया जा रहा है, आप कहीं पे भी जाएं, किसी के पास भी जाएंगी इन फ्यूचर भी, तो no one would be able to suggest anything out of that. That's my guarantee. So my recommendation is कि आप उसको प्लीज़ करिए. आप रेमेडी जहाँ से मन करे वहाँ से ले सकते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं, जिससे मन करे वहाँ से लीजिए, बट करिए. बिना किए होगा नहीं. एंड एज आई सेड, करना क्यों ज़रूरी है? करना इसलिए ज़रूरी है कि दिस कीप्स यू इंटैक्ट. जॉब, there seems to be an issue with the dasha and it is not favoring the time. Due to this, the jataka will experience uncertainties. आई एम कीपिंग इट वेरी लाइट ज्योति ऑन यू. आप इसको उसी हिसाब से करिएगा.
ज़्यादा बिना परेशान हुए। आपने अभी कोई स्टोन पहना हुआ है ज्योति? इफ़ यू कैन जस्ट लेट मी नो व्हाट स्टोन्स यू आर वियरिंग। अंकिता, इफ़ यू आर वेटिंग हेयर तो आप प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वो यहाँ लिखी हुई हैं। अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू हेल्प। Thank you Jyoti for confirming. So you need to have the howlite. You also need carnelian. You need citron. Okay. Just hold on. Thank you Ankita, thank you. Please follow the instructions. That is for your good. मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो करिए, और अपना प्रीवियस मैसेज आप डिलीट कर सकती हैं। अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू ट्रैक यू डाउन कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। दैट ऑल इज़ ईजी टू ट्रैक यू डाउन। सो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ से डिलीट करिए। ओके फाइन। ज्योति, आप ऐप को एक बार चेक कर लीजिए। These are like pills, right? The way you go to the doctor and doctor advises you certain pills, and then there is a specific way कि सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है। Astrology is pretty much similar when it comes to remedies. There are a few experts who do not believe in this, but I have a different philosophy. My point is very simple, that do it just to keep you aligned with your aspirations. Otherwise it's very simple, yeah. It's very simple. Even if you start getting up early in the morning every day at 5 a.m., fix your bed. Follow a simple ritual to make sure you clean your stomach. Eat healthy, sleep on time. Things would automatically fix in your life. But can you do that? No, right? You would not be able to. Yeah, Jyoti, I'll help you with that. Just hold on, Jyoti. So Jyoti, if you see my screen, right? तो आपको यहाँ पे ऐप दिख रही होगी. So within the app, if you go and if you click on the Kundli, this is your Kundli. You will be able to see. Obviously this is Lacuna Astro's test profile, but आपको यहाँ आपकी कुंडली दिख रही होगी. उसके अंदर जब आप रेमेडीज़ पे टैप करेंगी तो यहाँ आपकी सारी रेमेडीज़ लिस्टेड होंगी. ज्योति, आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए जो अभी मैंने बताई हैं. आप ऐप के अंदर जाइए, अपनी कुंडली में जाइए, वहाँ आपको क्रॉस पे टैप करना है. ऊपर जो क्रॉस बना हुआ आ रहा होगा, इस आइकन की बात कर रहा हूँ मैं. इस पे टैप करेंगी आप तो आपको आपका रेमेडीज़ वहाँ पे दिख जाएंगी.
I understand that a lot of people are facing trouble. So what I'll do, I'll introduce a tab on the dashboard itself. आपको डैशबोर्ड पे एक टैब दे दिया जाएगा, जहाँ आप टैप करेंगे तो आपको आपकी रेमेडीज़ दिख जाएंगे. सो विल डू दैट सून. दिस विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट वर्जन. हम जल्दी उसको करके रिलीज़ करेंगे आप लोगों के लिए. जो लोग यहाँ चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आई एम द फाउंडर एंड CTO ऑफ दिस प्रोडक्ट. This is my company. I come from IT background and now this is my full-time profession. Yeah, Ankita, so please do share your token. टोकन आपको आपकी कुंडली में यहाँ मिल जाएगा नीचे. कॉपी प्रोफाइल के अंदर आ रहा है ना, कॉपी प्रोफाइल लकुना कोड. यहाँ पे आपको आपका कोड दिख रहा होगा. यू जस्ट टैप ऑन दिस. एज सुन एज यू टैप इट विल कॉपी द कोड, और वो कोड ला करके आपको यहाँ पे शेयर करना होगा. Whoever is new to the channel, and if you are here to just watch me what I'm doing, please continue watching, enjoy. If you are here to ask something, then please don't waste your time. Follow the instructions which are written here, and just hold on, I'll show you the instructions. Follow the instructions which are written here, and based on those instructions please act. Share your token and I would be more than happy to help you. By the way, we are pretty close to finish the session for today, and Ankita Srivastava is going to be the last one for today's session. So we'll cover Ankita and then I would say goodbye to everyone. Thank you, Ankita. This is remarkable. Good to see that you managed to follow the instructions. Highly appreciated. Ankita, I'm opening your chart. Meanwhile, if anybody is new, right? So you will get to see a subscribe button there, right? It should be on your screen somewhere. When you touch that, right, it will get changed to subscribed. So I would say try that. Just tap, it works. Ankita, you are 1996 born, and oh my God. Ankita, I would say that your marriage would be okay, your career would be okay, but you are having certain behavioral issues also. I mean, you may be pretty angry woman. गुस्सा उस्सा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और बिना बात का गुस्सा करने की आदत हो सकती है आपको. So that is something which is quite annoying. Yeah, I knew. After speaking that, right, I thought that now you would be thinking, oh my God, my chart is screwed up. So no, that's not the case. It's not screwed up completely. So there are certain concerning areas which I think if you change, you would be doing pretty good in your life. One thing I would like to call out that stop getting angry unnecessarily, right? That's not helpful for you. Even if you are preparing for anything related to, these kind of people are very fit for armed forces or any sort of medical field. And within the medical field, mostly people
I mean, you are a girl, then most of the girls with this kind of configurations go for gynecologist kind of thing, right? But I don't know whether you are preparing for medical or not. Just hold on. What are you preparing for? You are preparing for teaching, or you are preparing for medical, or you are preparing for UPSC or something? What are you preparing for, Ankita? Ankita, please quickly tell me. Oh my God! See, so that is good thing. That is really good thing. So why are you asking for career advice? You have done your MBBS, right? So medical profession is quite suited based on your chart. So your chart is quite favorable for that. But uh, I want to understand what's the concern about your career. Doing MBBS, isn't it a good start? What is bothering you, Ankita? Marriage, I think it is most likely going to be an arranged marriage. Uh, yeah, MD plans I can see when is the favorable time for you, and that is considered as higher studies. So I can check that when the specific dashas are coming. That I would definitely check. But for marriage, I think don't try to go for love marriage. I mean, it's less likely to be sustainable. I mean, see, I should not say sustainable, but it's less likely that you would fall in love. So I don't think that you would fall in love. Yeah. So it is most likely this kind of arrangement seems to be a arranged marriage material. So that is what I can say. If you are already engaged to somebody, then that guy's chart would definitely help us, if that is what is bothering. Sometimes what happens, right? Why are you getting sad? But sometimes what happens, right? You may not be the one who is initiating something, right? Somebody else is initiating that. So in your chart, it's very stable when it comes to marriage, and these kind of charts are less likely to go for love marriage. And even if you go for love marriage, I'm not denying that possibility, but what I'm saying that first of all, there is a very low possibility of you saying I love you to someone. That is one thing. And second thing, even if you fall in love, then that would be initiated by the opposite party. Third thing, even if you fall in love somehow and then go for a marriage, then uh, it would be okay. You are not going to face any trouble there. So that is pretty okay. Now looking at your chart for possibility of higher studies, just hold on. Soham, hold on. I'll just complete Ankita and then I'll come to you. And Soham, I wanted to close after Ankita. So make sure your question is short, so that we can quickly cover it and then I'll run away. Okay. So you have to make sure your question is short. So I'm just covering Ankita at the moment. I'll update her remedies and then I'll come to you. Just hold on.
Ankita, just be with me for 3 more minutes. I'm just looking into your chart. Ankita, can you confirm what you want to specialize in? What do you want to make your speciality, Ankita? Can you confirm that, please? And I think for that there is a exam, right? If you can tell me the dates of that specific exam when is that coming, then that would be really helpful. Very good, yeah. Very good. Very good. Very good. I'm loving it. Thank you. Now the last thing, can you tell me when is the time when there would be November 9th? Okay, perfect. Thank you so much. Highly appreciated. Just give me 2 minutes. It's in November 9th. Give me 2 minutes. I mean, why I'm asking you to wait for 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. You wait. It will take some time. Let me complete it and then I'll come back to you. Hold on. October, Buddh, Rahu, Shani, October, Feb. And how long it takes to get the results? Means after exam, how long it will take you to get the results? In what month it would be coming, if you can tell me? By 20th of November. No, hold on, let me see, then you can decide. See, Ankita, I'll not just hold on. Just hold on. I thought you were the last one, so I wanted to do it properly in the sense I do it properly for everyone, but I wanted to get into a little bit of more details. Mercury, Rahu, Saturn. Mercury, 11th house. It's in the dead state. It's exalted. Aura sitting with the
and okay, Saturn. Saturn sitting in the 5th house, supporting the education, main Rashi, neutral. It's in the neutral one. Ankita, I would say that please go for the exam. At least 2 out of 3 are confirming to this, right? So we are looking at your Mahadasha, Antardasha and Pratyantardasha. So your Mahadasha and Antardasha are supportive for this time. So I would say that, and the Antardasha is neutral. So it is not neither confirming nor denying. So I would say please go and appear for the exam. Just tell me one thing, in case if you don't manage to clear this, then can you fall back to whatever you have, or that option is gone, Ankita? तनु हम ऐसे नहीं लेंगे, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है, आप इसको फॉलो कर लो, और अभी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम नो तनु नो प्लीज़ से नहीं होगा. हाँ ठीक है. सो अंकिता आप ये एग्ज़ाम दे लो. इट इज़ नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ, मीन्स इट्स अ फेवरेबल टाइम फॉर यू इज़ व्हाट आई वांट टू से. टाइम आपके लिए फेवरेबल है, आप उसको देख सकती हैं, एग्ज़ाम दे लीजिए. और इन केस अगर किस्मत आपकी इतनी ज़्यादा वो है, नॉन सर्जिकल है, तो आप फिर नॉन सर्जिकल ले लीजिएगा. बट डोंट ड्रॉप दिस आइडिया. हाँ तो तनु टोकन शेयर करेंगी तो आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू. एंड अंकिता, आई डोंट वांट टू सजेस्ट यू एनी रेमेडीज एट ऑल. यू आर डूइंग प्रिटी गुड. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा छेड़ो मत अपने सराउंडिंग्स को. it's going okay. There is a very minor thing you can do, but उसका भी मुझे लगता है कोई ज़रूरत है नहीं. So you just go ahead, give your exam, enjoy, and if you clear, then I would be more than happy to hear back what was the outcome. Most welcome, Ankita. But I would still update the logs of the application so that next time when we speak, in case we speak, तो मुझे पता रहेगा कि what we discussed. And if anybody who is new here, right, then please do subscribe to the channel. That will keep you informed whenever I'm live. We keep on posting also if there is a change in the time slot. तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी. So for that I have a humble request that please do subscribe to the channel. Tanu, to get the token, yeah Ankita, I'm very positive that it would be good news. Yesterday we were doing a few readings, right, and what happened, back to back 2 people came and their charts were not very favorable, and they both were asking about studies, right, and, and at the end what happened, one of the guys said that, sir, सबका ही problem है क्या? So I requested him that कि आओ किसी और सेशन में आओ, then you will get to know कि सबका सेम होता है. So Ankita, you could be a classic case, right, where your chart is quite stable, दशा is very stable. So वहाँ ज़्यादा छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत है? Neither you need a remedy nor you need any sort of rituals or preparations, right? Yeah, Tanu, I'm just suggesting you, hold on. So Tanu, what you need to do, जो आपका डैशबोर्ड है जहाँ पे आपने प्रोफाइल क्रिएट किया है, व्हेन यू गो इनसाइड इट, राइट,
यू विल गेट टू सी योर कुंडली. उसको नीचे स्क्रॉल करोगी तो यहाँ पे आपको टोकन मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको यहाँ पर जब आप जाएंगी तो यहाँ पर भी रीडिंग टोकन आता है. आप रीडिंग टोकन पे क्लिक करेंगी तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी. एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन गो अहेड एंड कॉपी एंड शेयर विद अस, एंड वी वुड बी एबल टू हेल्प यू विद दैट. एंड अंकिता, लॉट ऑफ विशेस फ्रॉम माई साइड, एंड बी पॉजिटिव. मेहनत करो, अपना मन लगा के पढ़ाई करो. डोंट गेट डिस्टर्ब बाय एनीथिंग. बाकी सब अच्छा होगा. Soham, I am going to take your question now. तनु, मैंने बताया तो कैसे मिलेगा. आप सुन नहीं रहे हो क्या मुझे? तनु, आफ्टर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन यू नीड टू क्रिएट योर प्रोफाइल. आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है. हाँ, तो प्रोफाइल बनाओ ना. डैशबोर्ड के ऊपर एक बटन दिख रहा होगा, उसको टैप करो. वहाँ जाकर के प्रोफाइल बनाओ. प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपना यहाँ पर टोकन कॉपी करके हमारे साथ शेयर करो. पहले प्रोफाइल बनाने के बाद मैसेज करो तनु. No problem, Tanu. I'll explain you again. Just hold on. Tanu, just hold on. I'll explain you again. Soham, just wait for a minute. So Tanu, एप्लीकेशन में जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगी तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा. इस डैशबोर्ड पे आपको कुंडली मिल जाएगी, आपकी डेली प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी, आपको आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट मिल जाएगा, आपको आपकी यहाँ पे लाइव गाइडेंस के अंदर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप. अब आप यहाँ कुंडली के अंदर जब आप जाएंगी तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टोकन आपको यहाँ मिलता है. या तो आप यहाँ से टोकन कॉपी कर लो, या आप यहाँ से टोकन कॉपी कर लो. मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे रीडिंग टोकन आ रहा होगा, आप वहाँ से भी टोकन कॉपी कर सकती हैं. कॉपी करके आप हमारे साथ शेयर करिए एंड वी वुड बी एबल टू लुक इनटू इट. एंड एनीबॉडी हु इज़ वेटिंग देयर इन और वाचिंग अस, राइट, आई वांट टू टेल यू वी आर क्लोज्ड फॉर द डे. सोहम एंड तनु आर द लास्ट. आफ्टर दैट विल नॉट टेक एनीबॉडी. हम लोग अंकिता पे ही क्लोज करने वाले थे, बट आई नो सोहम ऑलरेडी. सो सोहम को लेना बनता है क्योंकि आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द अर्ली सब्सक्राइबर्स आई हैव. तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर स्टेइंग हेयर, स्टेइंग विथ मी, ट्रस्टिंग इन मी. सो सोहम को मैं लूँगा. और तनु इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एंड डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट द टोकन. सो उसके रेस्पेक्ट में मैं उसको समय दूंगा. But after that, nobody I would take. Nothing is required. Chart is stable. Only study was shown as weak, but the Jataka has done quite good in studies. No remedies required. Da 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 da. Tanu, well done. Big round of applause for you. Great job. Great job, Tanu. Awesome, Tanu. Nice. I mean, why are you posting it four times? Is it your excitement? इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है. वी नो टोकन कैसा दिखता है. टोकन का डिज़ाइन मैंने खुद ने किया है. सो
and this is a AES 256 bit encrypted token which is highly secure. तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम तनु, आप बस 2 मिनट वेट करिए. हम या सोहम, आई रिमेंबर यू. मैं अपने आप यहाँ अभी तक हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर होते, लेकिन वी आर नॉट एमिंग टू हैव thousands of subscribers. We are aiming to have a niche group. तो मुझे हर एक अपने सब्सक्राइबर के बारे में पता है, unless they have directly came from somewhere and subscribed us. अगर वो लाइव के थ्रू आए हैं तो I know each and everyone whoever is there in my subscribers list, क्योंकि उनको एक एक को मैंने समय दिया, एक एक के साथ मैंने बात की है. सो आई रिमेंबर देम. एंड सोहम, यस आई रिमेंबर यू. एंड आई रिमेंबर दैट यू आर अ नाइस गाय. ओके सोहम. Career is not going well. Can you tell me when things will be okay and what you see coming in long run? I think you already started, right? You started working somewhere, Soham, right? (2001) life path number 9, birth number 9. Can you tell me what's the nature of your current job? Soham, oh good man, very good. In Bangalore, if you need any help, let me know. I do have a lot of good friends there, since I spent my 12 years of life in Bangalore. So if you need any help, I think last time also we spoke that you moved to Bangalore, and I told you the same thing, that if you need any help, just let me know. Hold on, Soham, hold on. And Tanu, you are next. Just be there. I would just covering Soham and then I'll come to you. Just hold on.
Last time, Soham, when you came, right? That time I think we used to focus largely on numerology, right? Our astrology module was not ready for the live readings. Uh, haven't you got any new offer yet? सोहम, कोई नया ऑफर अभी मिला नहीं है क्या? Just hold on, I'm just noting down the position of current planets. ना इतना कंफ्यूज मत हो, रुक जा, थोड़ा थोड़ा ठंड रख. टेंथ हाउस राहु इज shadowing at the moment in your गोचर. सो ये सब मेंटल स्ट्रेस तो बना ही रहेगा. Jupiter is aspecting your 10th house in Gochar at the moment. Mars is sitting in 10th house. No, Mars is aspecting your 10th house and Mars is retro as well. Okay. Yeah, Jupiter and Mercury both are very close to Sun, and they both are sitting together with Sun in the 10th house, and both of them are combust. Combust का मतलब अस्त हैं दोनों के दोनों. Just hold on. आने वाले तनु आने वाली है, बस 2 मिनट रुक जा. कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट एक बंदे का लगता है. 2 मिनट रुक जाओ बस. वी आर ऑलमोस्ट डन. आई नीड टू टेक माई नोट्स बिफोर आई स्पीक समथिंग, राइट? मरकरी अस्त है, जुपिटर अस्त है, राहु तो रेट्रो हमेशा रहेगा ही. सूर्य आपका यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ है, और सूर्य भी भाई साहब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बाल अवस्था में बैठे हुए हैं. चलो अब देखते हैं कि क्या करना है तुमको. नहीं सोहम, ज़्यादा पैनिक मत करो. आया समझ में? ये मैंने अभी क्या बोला, मीन्स दैट इज़ द रीजनिंग आई टुक दिस लॉन्ग, राइट? एंड तनु, दिस इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जब मैं तुम्हारी अभी रीडिंग पे आऊँगा तब तुम्हें भी इतना ही टाइम मिलेगा. सो यहाँ अगर आपके पास समय नहीं है एंड you have something more important than what you are asking for, तो क्या बोलूँ मैं? I can't say anything. So it's very important to do things right. यहाँ पे कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं. Whatever I say has a potential to change course of your life. तो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं. ओके तनु?
फार्म्स ऑफ दिनेश वी आर क्लोज फॉर द डे. फार्म्स ऑफ दिनेश हम आज के लिए बंद कर चुके हैं. वी हैव क्लोज फॉर द डे. सोहम एंड तनु आर द लास्ट वन. आप सब्सक्राइब करके चले जाइए. मॉर्निंग 10 बजे फिर से सेशन होगा कल. मॉर्निंग 10 AM शार्प दैट सेशन वुड स्टार्ट. आप तब आकर के अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं. अभी के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टोकन क्रिएट कर लीजिए, कल आइए. आज मैं नहीं ले पाऊँगा आपकी रीडिंग. So Soham, your time has started, your Dasha of Mars has started from June 2025. Okay Soham? And as I said, Mars is aspecting your 10th house and it's retro as well in your chart. Right now, Jupiter is there in the Gochar and Rahu is aspecting your 10th house in Gochar. And if you look at your Chalit Kundli, then your Sun, Rahu, Jupiter and Mercury are sitting together there. Out of those four, your Jupiter and Mercury are combust, मतलब वो अस्त हैं. So now in this current situation, आपका ये जून से स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक आपका ये डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है आपने फॉर्मली डिसाइड कर लिया होगा कि मेरे को जाना ही जाना है. जून, जुलाई, अगस्त, तो आपने वहीं कहीं जून में ही, जून के आसपास ही कहीं पे रिज़ाइन मारा है. जुलाई के आसपास, जून जुलाई के बीच में ही कहीं पे आप रेजिग्नेशन दे के बैठे हो. एंड दैट इज़ व्हाट यू आर करेंटली इन. अब आपको ये देखना है कि हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन. सो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल दिख नहीं रही है मुझे अभी के केस में. इसको थोड़ा केयरफुली तुम्हें नेविगेट करना है. डोंट टेक एनी रैश डिसीजंस कि बस चलो घर चलते हैं, हम घर चल के कुछ कर लेंगे. चाहे घर से वहाँ से चले भी आओगे तो कुछ बहुत खास कर नहीं लोगे. द प्रॉब्लम वुड स्टिल रिमेन, बट लोकेशन चेंज हो जाएगी ऐसा में. सो यू नीड टू डू वन थिंग. इट्स सिटिंग इन द ओन हाउस, इट्स कैरेक्टर इज पॉप एंड इट्स retro also. ठीक है. डू वन थिंग सोहम, ये नंबर है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ. जो रेमेडीज़ तुम्हें करनी है वो यहाँ लाइव में जो हमारे पास डैशबोर्ड है उसमें है नहीं, तो आई कांट अपडेट इट देयर. बेसिक चीज़ें मैं अपडेट कर दे रहा हूँ. इस नंबर पे एक बार मैसेज डाल देना, वहाँ से अपना टोकन डाल देना and we would respond back. Tanu, you are next. Please be on the line. Issues with job. Mars is retro and the transit started in June of this month. Jataka resigned somewhere same time. तनु अपना क्वेश्चन तब तक आप यहाँ लिख दो. I'm coming to you. जो इन जनरल रेमेडीज़ हैं जो तुम्हें एनी हाउ करनी है वो मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, वो कर लो. बाकी कुछ स्पेसिफिक हैं जो यहाँ पे है नहीं, लाइव डैशबोर्ड में वो ऐड नहीं है, तो उसके लिए मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे अपडेट करवा दूँगा तुम्हें. लेकिन वो कल सुबह ही बता पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा. एंड देयर आर गुड टेम्पल्स अराउंड देयर इन बैंगलोर, सो यू कैन गो टू एनी टेम्पल. विल टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन देयर, और कर लेना उसको. ओके और ज़्यादा परेशान मत हो. वहाँ से भाग करके घर आओगे, कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं आ जाएगा लाइफ में. होल्ड ऑन. Okay. Green mentioning.
बस आ रहे हैं तनु आपके पास, होल्ड ऑन। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एनीबडी हु इज़ सीकिंग द हेल्प must have the application and create their token, must take care of himself. The time ahead is challenging. The remedies must help him sail through this time. ठीक है भाई, it is updated now. Soham, it is updated. You can go in the app and see that where exactly you can see the remedies, right? आप remedies एक बार check कर लो. I'll go to Tanu and then we'll close for the day. Yeah, your remedies are updated there. There is one more remedy which you need to try, Soham. For that, you just drop a message on the number I gave you. I think last time also I requested you, but you never came back. You never messaged. So थोड़ा सा अपना ध्यान रखो. हाँ ठीक है तनु, दैट्स ओके, जस्ट होल्ड ऑन. सर मेरा SSG CGL 2025 गवर्नमेंट एग्ज़ाम है 21 को और जनवरी में मेंस है. अप्रैल तक रिज़ल्ट आएगा. कैसे क्या करियर रहेगा? ओके. MA का पोस्ट चाहिए जो फॉरेन के लिए भी अप्लाई होती है, जैसे 2 साल इंडिया एंड 2 साल बाहर. मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ लेकिन मेरी ये प्रायोरिटी है. ओके फाइन फाइन तनु, होल्ड ऑन. See Tanu, chances of you clearing government exam is very low. Okay. Specifically this SSC CGL, right? It is less likely to happen.
Just hold on. 21st को एग्ज़ाम ना. No, Tanu, there are no chances and there are no remedies also. तो इस अटेम्प्ट में तो ये नहीं निकलने वाला है. आप देख लो, बाकी निकल जाए तो आगे बताना. ओके. चाहे जो हो, चांसेस है नहीं. हो जाए तो मुझे आगे बताना, बट वैसे कोई चांसेस है नहीं. 70% वी आर श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बाकी आपको अगर हो जाता है, आप इफ़ यू सी द रिजल्ट्स देन प्लीज़ लेट अस नो. नहीं तनु, नहीं होगा. मतलब ये जो टाइम है इसमें तो चांसेस कम ही हैं, और कोई रेमेडी इसके लिए आप ट्राई नहीं कर सकते हो क्योंकि समय बहुत कम है. हाँ, आप ही थोड़ी कर रहे हो तनु, लाखों बच्चे कर रहे हैं, सब थोड़ी हो जाते हैं. तो अभी का जो समय है उसके लिए तो देयर इज़ अ बिग नो. आपका जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो 2026 में है, वो भी अक्टूबर महीने में. 2026 से थोड़ा फेवरेबल टाइम है आपके लिए. अभी तो आप जितने एग्ज़ाम देने आप दे लो, किसी में भी हो जाए तो मुझे आके एक बार बताना प्लीज़. 2026 अक्टूबर तक आप वेट कर, आपको थोड़े स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे. या 2026 अक्टूबर, या मोटा मोटा आप पकड़ के चलो दिसंबर के आसपास से. उससे पहले आप जितने एग्ज़ाम देने आप दे लो, आराम से दे लो. आपका जैसा भी रिज़ल्ट आता है आप प्लीज़ आके बताना. वेरी गुड, वेरी गुड. बट ये जो आप एसएससी ट्राई कर रहे हो ना, एसएससी सीजीएल का चांसेस कम है. कोई भी अभी दशा ऐसी है नहीं जो सपोर्टिव हो. ओके. तो आपने वो पहले कभी दिया था, उसकी गारंटी अभी यहाँ कहाँ से देते हम. और अगर आपने 2024 में कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसका पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाता. लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम योर 2024 मार्च से योर दशा हैज़ चेंज्ड. तो इस टाइम में अगर आपके पास फेवरेबल दशा नहीं है तो आई डोंट थिंक कि वो क्लियर होगा. उसका रिजल्ट आ गया है क्या तनु? आप कह रहे हो उसमें आपका हो गया? Yeah, I read that Tanu, but my question is, have you got selected?
Tanu, have you got selected in that? देयर वॉज अ थिन पॉसिबिलिटी, दैट इज़ ओके, बट अभी कोई ऐसा चांस है नहीं आपका. स्पेशली ये जो एसएससी वाला है इसमें नहीं होगा. आप प्लीज़ ट्राई कर लीजिए, आ जाए तो बताइएगा. एनीथिंग विच आई सेड इज़ रिलेटेड टू एसएससी. सीईटी आई थिंक ये आपका उससे रिलेटेड है, राइट? आप एसएससी वाला देख लो, देखिए, एंड यू कम बैक एंड टेल मी अगर हो जाता है तो. अकॉर्डिंग टू योर चार्ट टाइम इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक इवेंट. तो आप वो देख लो, अगर हो जाता है तो आप बताना. देर आर नो रेमेडीज़ फॉर दिस. टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, उसमें फालतू में आप कुछ अटैम्प्ट करो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. Okay, everyone, this was a remarkable day. We did around 12 readings today. 12 readings including morning and evening, both the sessions, which is pretty much within the range we do every day. So in 1 hour we try to close around 6 readings. So in this specific instance, we managed to close 12 readings today because we did 2 hour session, 1 hour morning, 1 hour evening. So our sessions are happening twice in a day. Morning 10 a.m. to 11 a.m. and evening 8 p.m. to 9 p.m. is the time frame we aim for, but the session sometimes goes for 2 hours also. Now I would request you to allow me to leave now. We'll again connect tomorrow morning and evening. So these are the two sessions. In case if you are seeking any sort of advice related to astrology, then my humble request would be to please subscribe to the channel. That would allow you to get a notification whenever I'm available. On this channel, we don't entertain spammers. We don't entertain impulsive people. Anyone who is doing spamming would be removed out of this channel. We would simply throw you out of this. We don't care whether you subscribe, you don't subscribe. But decency is something which we expect you to maintain when you are here. And the other requirement is that you must have the Lacuna Astro application. You must create your profile, and based on that profile you would be given a token. That is a token which is given to you, and it's a lifelong token. Once you have that token, you must share that. Based on that, your readings would be done. Now this is the time I would like to close now. This is your host Anand. I'm signing off for today. Let's connect tomorrow evening again and morning as well. So thank you everyone. Good night.